Hello students. You are watching Asan Public School. And I am your teacher Muhammad Asan Khan. So today we gonna talk about English of class 10th. Chapter number 6. A Bad Dream. So let's begin. What happened, son? I saw a bad dream about Mr. Aziz and his family. And about Mr. Kareem and his family. What you saw, tell me. Okay, Mom. The train was slowly moving out of the station. Everyone was very excited. Mr. Aziz and his family were finally on their way for a long-awaited trip. They had planned and waited for this holiday for nearly 3 months. They were very happy as Mr. Aziz's brother, Mr. Kareem, and his family had also decided to accompany them. The two families got along very well together. They often went on picnics together, but this was the first time that they had decided to spend 10 days together. Everyone was in a good mood. They had booked a whole compartment in the train, which had attached bathroom. The elders were talking about the village and they had planned to visit. The children were playing cards and joking and teasing each other. Mr. Kareem asked his brother what kind of house he had booked and whether it was near the station. Mr. Aziz said that the house was far from the station and was situated near the fields, to enable them to truly appreciate and enjoy village life. They would have to hire a van to get the house. The journey passed very comfortably. In the morning, they reached Potmi. Everyone was very excited as they got off the train. The station was small and dusty. There was only one porter at the station who helped them unload their luggage. He asked them where they wanted to go. When Mr. Aziz told him, he looked at him in a strange manner. "Are you sure, sir?" he asked. "Yes," said Mr. Aziz. The porter took them outside. He looked around and found the van driver. He told him where these people wanted to go. The van driver had a strange, frightened look on his face. "Are you sure, sir?" he asked. Mr. Aziz could not understand why everyone was asking this, as the porter had also asked the same question. He failed to work out what was bothering these people. Anyway, they put their luggage in the van, and they also got in. On the way, Mr. Aziz told the driver that they had rented the house for 10 days. The driver told him that the people of the area believed that the house was haunted. Mr. Aziz laughed and said he did not believe in such stories. When they reached the house, they quickly unloaded their baggage, paid the driver, and went in. They did not find anything strange about the house. In fact, they liked it as it was big and airy, with a nice view of the fields and village. There were 3 bedrooms in it. Mr. and Mrs. Aziz took one room, Mr. and Mrs. Kareem took the other, and the children took the 3rd room, which was the biggest room of all. They unpacked their belongings, and after a light lunch they went out and looked around the garden. In the evening, they had early dinner, and everyone to bed, as they were all very tired. The next morning, everyone got up early. After breakfast, they went out into the fields, where they met some people from the village. When they told these people where they were living, the villagers were shocked. Some of them even told them to leave before the ghost harmed them in some way. They just laughed and told the people that there was no such thing as ghosts. The villagers shrugged and said, "May Allah protect you." And so, the days passed. They enjoyed clean air of the village and fresh vegetables from the fields. They all felt relaxed and did not want to go back. A week passed, and then strange things started to happen. On the 7th night, Mr. Kareem was sleeping very peacefully. Suddenly, he felt that someone was pulling his blanket. He thought it was a cat, so he pulled his blanket and started to sleep. Again, the same thing happened. This time he pulled the blanket up and held it tightly under his head and feet. When he did this, someone started pulling his bed. Now, he began to be afraid and could not understand what was happening. After a while, everything was normal, but he could not sleep the whole night. The next morning, he told the whole story to his brother and his wife. But nobody believed him. They said it was nothing. He was just trying to fool them. He tried to convince them, but they just laughed it off. In the evening, they all decided to go for a walk in the fields where people were working. The children enjoyed the cool breeze of the evening. They all had fresh cucumber, washed in cold water. On their return to the house,
Mr. Kareem said that he did not want to go back, yet he wanted to go for a long walk, so everyone went back while Mr. Kareem went for a walk. While he was walking, Mr. Kareem was thinking about the incident of the previous night. He was deep in thought when he felt someone walking behind him. He looked back but did not see anyone. It was getting dark. Mr. Kareem had a strange feeling. He quickly moved to the other side and started working back towards the hard. But then a strange thing happened. The head jump and block his way. He quickly and his rotate again and went to the other side, but the head jump on the other side. Mr. Kareem just did not know what to do. He was too scared to think as he was alone and no one was there to see him. He just closed his highness, darkening toward the house. After a while, breathing heavily, he stopped and opened his eyes. He looked back along the path. There was nothing. He began to walk as far as I could carry him and reached the house. Once inside, he quickly shut the door. He leaned against the door for a while to catch his breath, and then slowly went inside, where the rest of the family were lacking and chatting, having tea and biscuits. When the Mr. Kareem the frightened look on his face, they asked him if everything was all right. He sat down and then narrated the whole story of them. Once again, they all made fun of him and did not believe him. They say that he was allowing the ledge cause it to dominate his throat, and was amazing that their ghost on the last night of their visit. After all the children had gone to bed, Mr. and Mrs. Aziz and Mr. and Mrs. Kareem were sitting at the dining table talking about their visit to the village when a hair-raising one variance stunned them, and a teacher opposite Mr. Green chair and beside Mr. as he stared was pulled out, and it went in a bit, as if someone had sat on the chair and pulled the chair in words they could utter indication of anyone present. All of them just stare at each other. They are utter single word and they all start screaming. Actually, Mr. Kareem woke up next morning screaming from the sleep. Hi, some Mrs. Kareem beside his bed. Wake up, Mr. Kareem, you better hurry. We are supposed to be leaving now for a long-awaited trip. Mr. Kareem was taken aback. He said, are we not there already? The place of horror and Mr. Kareem has been sleeping all night, and they be awaited for him to wake up and accompany them for the trip. It become clear now that all those horrific experiences were the part of his all dream. Only Mr. Kareem thanked Mrs. Kareem to wake him off from his bad dream. Don't worry, son. It's just a bad dream. Ignore it. Okay. Almighty Allah do well in everyone's favor. ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से बाहर निकल रही थी। हर कोई बहुत परजोश था। जनाब अजीज और उनका खानदान बालाखिर एक तवील इंतजार के सफर के लिए अपने रास्ते पर थे। उन्होंने तकरीबन मुफ्त महीनों तक उस छठी का मंसूबा बनाया और इंतजार किया। वो बहुत खुश थे कि उनके जनाब अजीज के भाई जनाब करीम और उनके अहल खाना ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया था। दोनों खानदान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। वो अक्सर एक साथ पिकनिक पर जाते थे, लेकिन ये पहला मौका था जब उन्होंने 10 दिन साथ गुजारने का फैसला किया था। सब अच्छे मूड में थे। उन्होंने ट्रेन में एक पूरा डब्बा बुक कर रखा था जिसमें बाथरूम भी शामिल था। बुजुर्ग गांव के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने आने का इरादा कर रखा था। बच्चे ताश खेल रहे थे और आपस में मजाक और छेड़छाड़ कर रहे थे। जनाब करीम ने अपने भाई से पूछा कि आपने कौन सा घर बुक कराया है और क्या ये स्टेशन के करीब है। जनाब अजीज ने कहा कि घर स्टेशन से बहुत दूर था और खेतों के करीब वाक़ था, ताकि वो गांव की जिंदगी की सही मानों में तारीफ और लुत्फानंदोज हो सकें। घर हासिल करने के लिए उन्हें एक वीन किराया पर लेना पड़ेगी। सफ़र बहुत आराम से गुजरा। सुबह होते ही वो पिटनी पहुंच गए। ट्रेन से उतरते ही सब बहुत परजोश थे। स्टेशन छोटा और गिरद आलूद था। स्टेशन पर सिर्फ एक पोर्टर था जिसने उनका सामान उतारने में उनकी मदद की। उसने उनसे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। मिस्टर अजीज ने इसे बताया तो उसने अजीब अंदाज में उसकी तरफ देखा। क्या आपको यकीन है जनाब? उसने पूछा। हाँ, अजीज ने कहा। पोर्टर उन्हें बाहर ले गया। उसने अधर अधर देखा तो एक विंड ड्राइवर मिला। उसने इसे बताया कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। विंड ड्राइवर के चेहरे पर अजीब और खौफजदा नजर आ रही थी। क्या आपको यकीन है जनाब? उसने पूछा। अजीज साहब समझ नहीं पाए कि सब ये क्यों पूछ रहे हैं कि उनके पोर्टल ने भी यही सवाल किया था। वो ये जानने में नाकाम रहे कि उन लोगों को क्या परेशान कर रहा था। बहरहाल उन्होंने अपना सामान विंग में रखा और वो भी अंदर आ गए। रस्ते में अजीज साहब ने ड्राइवर को बताया कि उन्होंने मकान 10 दिन के लिए किराए पर लिया है। ड्राइवर ने इसे बताया कि इलाके के लोगों का ख्याल है कि ये घर अड्डा है। जनाब अजीज ने हंसते हुए कहा कि वो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखते। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने जल्दी से अपना सामान उतारा और ड्राइवर को अदायगी की और अंदर चले गए। दरहकीकत वो इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये बड़ा और हवादार था, जिसमें खेतों और गांव का अच्छा नज़ारा था। उसमें 3 बेडरूम थे। मिस्टर और मिसेस अजीज ने एक कमरा लिया। मिस्टर और मिसेस करीम ने दूसरा कमरा लिया और बच्चों ने तीसरा कमरा लिया जो सबसे बड़ा कमरा था।
उन्होंने अपना सामान खोला और हल्के फुल्के खाने के बाद बाहर निकल कर बाग का जायजा लिया। शाम को उन्होंने जल्दी रात का खाना खाया और सब लोग सो गए क्योंकि हम सब बहुत थके हुए हैं। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए। नाश्ता करने के बाद वो बाहर खेतों में चले गए, जहां उनकी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। जब उन्होंने उन लोगों को बताया कि वो कहाँ रह रहे हैं तो गांव वाले हैरान रह गए। उनमें से बाज ने उन्हें यहाँ तक कहा कि वो चले जाएं उससे पहले कि भूत उन्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। वो सिर्फ हंसे और लोगों को बताया कि भूत नाम की कोई चीज नहीं है। गांव वालों ने कंधे अचका कर कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, और यूं दिन गुजरते गए। गांव की साफ सुथरी हवा और खेतों की ताज़ा सब्जियां, उन सब ने सुकून महसूस किया और वापस नहीं जाना चाहते थे कि एक हफ्ता गुजर गया और फिर अजीब व गरीब चीजें होने लगीं। 7वीं रात जनाब करीम बहुत सुकून से सो रहे थे। अचानक से महसूस हवा कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। उसने सोचा कि ये बिल्ली है तो उसने कंबल खींचा और सोने लगा। एक बार फिर वही हवा। उस बार उसने कंबल ऊपर उठाया और इसे अपने सर और पैरों के नीचे मजबूती से थाम लिया। जब उसने ये किया तो कोई उसका बस्तर खींचने लगा। अब वो डरने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन वो सारी रात सो न सका। अगली सुबह उसने सारा वाकया अपने भाई और बीवी को सुनाया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। कहने लगे ये कुछ नहीं है, वो सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ हंस पड़े। शाम को उन सब ने फैसला किया कि वो खेतों में सैर के लिए जाएं जहां लोग काम कर रहे थे। बच्चों ने शाम की ठंडी हवा का लुत्फ उठाया। उन सब ने ताज़ा खीरे को ठंडे पानी में धोया था। घर वापसी पर जनाब करीम ने कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहते, फिर भी लंबे लंबे चहलकदमी के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए सब वापस चले गए जबकि जनाब करीम सैर के लिए गए। जब वो चल रहा था तो करीम साहब पिछली रात के वाक़े के बारे में सोच रहे थे कि वो गहरी सोच में थे कि उनके पीछे कोई चलता हुआ गिरा। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नजर न आया। अंधेरा हो रहा था। जनाब करीम को एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो तेजी से दूसरी तरफ चले गए और अमला मुश्किल से वापस काम कर रहा था, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई कि सर अच्छलकर उसका रास्ता रोकता है और वो तेजी से घूमकर दूसरी तरफ चला गया। लेकिन सर अच्छलकर दूसरी तरफ चला गया। एमआर करीम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो ये सोच कर भी डर गए क्योंकि वो अकेले थे और इसे देखने के लिए कोई नहीं था। उसने बस हाइंस को अंधेरा करते हुए बंद कर दिया, जिसके बाद घर में कुछ देर के बाद भारी सांस ली। वो रुका और आंखें खोली। उसने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। वो चलने लगा जहां तक मैं इसे ले जा सकता था और घर पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुछ देर सांस लेने के लिए दरवाजे के साथ ही उतरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया जहां बाकी घर वाले चाय और बिस्किट से महरूम थे और गिफ्ट शिप कर रहे थे। जब मिस्टर करीम ने उसके चेहरे पर लड़ाई देखी, उससे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। उसने नीचे कहा और फिर उनको सारी कहानी सुनाई। एक बार फिर सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर यकीन नहीं किया। वो कहते हैं कि वो दिलेज को उसके गले पर हावी होने की इजाज़त दे रहा था और ये हैरत अंगेज था। उनका भूत उनके दौरे की आखिरी रात, जब तमाम बच्चे सोने के बाद मिस्टर और मिसेस अजीज और मिस्टर और मिसेस करीम खाने की मेज पर बैठे अपने गांव के दौरे के बारे में बात कर रहे थे कि एक बाल बढ़ते हुए एक फर्क ने उन्हें रोक दिया और मिस्टर ग्रीन चेयर के सामने और मिस्टर के पास मौजूद एक उस्ताद को घूरते हुए बाहर निकाला गया और वो कुछ उस तरह चला गया जैसे किसी ने कुर्सी पर बैठकर अल्फाज में कुर्सी खींच दी हो। वो किसी की मौजूदगी का इशारा दे सकते हैं। वो सब सिर्फ घूरते रहे एक दूसरे के लिए। वो एक ही लफ्ज हैं और वो सब स्ट्रीम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल मिस्टर करीम अगली सुबह नींद से चीखते हुए उठे। हाय हाय, कुछ मिस करीम अपने बस्तर के पास से उठी। मिस्टर करीम आप जल्दी करें, हम अब एक तवील इंतजार के सफर पर जी रहे हैं। मिस्टर करीम वापस ले रहे थे। उन्होंने कहा, हम वहाँ पहले ही खौफ व हरास की जगह नहीं। जनाब करीम सारी रात सोते रहे और वो उनके जागने का इंतजार करते रहे और उन्हें सफर के लिए कंपनी में ले जाने के बाद अब ये बात वाज़ हो गई है कि वो तमाम होलनाक तजर्बा जहाँ उनकी तमाम तर यादों का हिस्सा है। सिर्फ मिस्टर करीम ही मिस करीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें अपने बड़े ख्वाब से जगाया। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel.